ये कोई कंटेनर है, इसमें एक सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल का, दैट इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड है। राइट, एक सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, इट्स सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो. We have to find net force on cylinder. Net force on cylinder by liquid. कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट? तो एक फोर्स होगी ऊपर F1, एक फोर्स होगी नीचे F2. ये हाइट मान लेते हैं H1, ये हाइट मान लेते हैं H2. ठीक है, एक फोर्स टॉप सरफेस पे, एक फोर्स बॉटम सरफेस पे, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, राइट? फोर्स ऑन top surface F1 is equal to P1 into A. प्रेशर टॉप सरफेस पे किस हाइट की वजह से? H1 हाइट की वजह से. सो दैट इज H1 रो G A. नाउ फोर्स ऑन बॉटम सरफेस, force on bottom surface F2 is equal to pressure and area, और प्रेशर वहां पे किस साइड की वजह से? H2, तो H2 रो G A, राइट? ये तो हो गई फोर्स ऑन टॉप एंड बॉटम. फोर्स, नेट फोर्स ऑन साइड इक्वल्स 0. साइड पे फोर्स 0 क्यों होगी? सोचो, ये सिलेंडर है, एक फोर्स इधर से लगी, एक फोर्स इधर से लगेगी, दोनों फोर्स सेम लेवल पे है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगी. इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 हो गया. तो साइड में जिधर भी एक फोर्स लग रही होगी उसके अपोजिट एक और फोर्स होगी, तो नेट फोर्स 0 होती जाएगी. तो साइड में नेट फोर्स हमेशा 0 होगी. What is left is top and bottom. So net force on cylinder, कौन सी फोर्स ज्यादा है? बॉटम वाली. सो दैट इज F2 माइनस F1. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया? H2 रो G A माइनस H1 रो G A, दैट इज H2 माइनस H1 रो G A. What is H2 minus H1? That is the length of cylinder. So F is equal to L A rho G, and this LA is what? Volume of the cylinder. So this is what is the net force on the cylinder, V rho G, right? Volume of cylinder, density of fluid into G, right? This is volume into density is mass. Volume into density is mass. और ये mass किसका है? Mass of fluid displaced by cylinder.
मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर। यानी अगर हम यहां से सिलेंडर को हटा देंगे तो उतनी जगह में लिक्विड आएगा और उस लिक्विड का वेट कितना होगा, v rho g, राइट। So the conclusion, what is the conclusion? Force on an object immersed in fluid equals weight of fluid displaced by object in upward direction. In upward direction. If I have a vessel, some liquid is filled in vessel, and an object is placed in the liquid, then this will experience a force upward, and this force equals weight of displaced fluid. This we have proved. So we can replace all the forces acting with one force that is in upward direction, and that is equal to weight of displaced fluid. Is it clear? This force is called upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force. इस फोर्स को हम बोलते हैं upthrust या buoyant force. Yes, Archimedes principle. That is proof of Archimedes principle. Okay, so this force is called upthrust or buoyant force. तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में इमर्स करेंगे उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और जिसका अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा, और इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं. एग्रीड? Whenever a body is immersed partially or wholly in a fluid, it experiences an upward force called upthrust or buoyant force. Right. This force equals weight of fluid displaced by body.
right? This we can write in other word, or whenever a body is immersed partially or wholly, it loses its weight equal to weight of displaced fluid. इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यानी जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करेंगे तो उसका कुछ वेट कम हो जाएगा, और वो वेट उतना ही कम होगा जितना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा, राइट? buoyant force is equal to V rho G. V, volume of displaced fluid, or volume of body inside fluid. Rho, density of fluid, right? Apparent weight in fluid equals actual weight minus buoyant force. जो अपरेंट वेट होगा बॉडी का वो कितना होगा? एक्चुअल वेट माइनस buoyant force. Apparent weight of a floating body equals 0. That is, for floating body, buoyant force equal weight of body. Relative density or specific gravity of a substance is the ratio of density of substance to density of water. Density of substance to density of water, right? इसको हम बोलते हैं relative density. जिसकी भी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. In general, density of water equals 1000
kg per meter cube and equals 1 gram per centimeter cube. 1000 kg per meter cube या 1 gram per centimeter cube. Relative density of wood 0.36. Relative density of liquid 0.9. ठीक है, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग तो वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू बायंसी. क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो वेट बायंसी के बराबर होगा. वेट इज वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू डेंसिटी ऑफ वुड इनटू जी. दैट इज वेट ऑफ वुड. Buoyancy is volume of body inside. The volume of body inside into density of liquid into G. ये G कैंसिल कर दो. दोनों साइड डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो क्योंकि हमको दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. नाउ वुड की डेंसिटी कितनी है? 0.36 वॉल्यूम इनसाइड. लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 0.9. सो दिस वे वी गेट वॉल्यूम इनसाइड. वॉल्यूम इनसाइड is V into 0.36 upon 0.9. तो वॉल्यूम इनसाइड इज 0.4 V. तो वॉल्यूम आउटसाइड इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड. So V minus 0.4 V. So volume outside is 0.6 of the total volume. So fraction of volume outside is 0.6. Fraction means outside upon total volume. So this is 0.6. A is half inside and B is 2/3 inside. ठीक है? For A, volume of A into density of A into G. And inside कितना है? Half. तो half of volume of A into density of water into G. इसमें से ये कैंसिल हो गया. Keep it equation 1. For B, volume of B into density of B into G, and it is 2/3 inside. So 2/3 volume of B into density of water into G. G cancel, B cancel. Equation 2. Now 1/2. So density of A upon density of B is equal to 1/2 upon 2/3. So that is 3/4. एयर में हम एक्चुअल वेट लेते हैं. हालांकि ये एक्चुअल वेट होता नहीं है क्योंकि एयर की भी कुछ बायंसी होती है. तो एक्चुअल वेट तो वैक्यूम में होता है, बट अगर हम एयर की जो बायंसी है उसे नेग्लेक्ट कर दे, सो दैट विल बी एक्चुअल वेट इन एयर. This is apparent weight in water. और ये कम क्यों हो गया? क्योंकि बायंसी थी. तो प्रैक्टिकली बायंसी ऑफ वाटर कितनी हुई? जितना वेट कम हो गया, वेट कितना कम हुआ?
1 न्यूटन, 5 से 4 हो गया तो 1 न्यूटन. So buoyancy of water is 1 Newton. This is apparent weight in some other liquid. That is what? 4.5. So what is the buoyancy of liquid? 4.5. Right? और हमको निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. apparent weight is equal to weight minus buoyancy. So buoyancy of water is equal to 5 minus 4 is equal to 1. Buoyancy of liquid, एक मिनट, buoyancy of water हो गया वॉल्यूम into density of water into G is equal to 1. That is equation 1. Now, buoyancy of liquid is equal to 5 minus 4.5, 0.5. और buoyancy of liquid होगा volume into density of liquid into G. This is equation second. ये equation 2 है. Now equation 2 upon equation 1. तो V और G तो कैंसिल हो गए. Density of liquid upon density of water is 0.5. This is what we needed actually.